Happy weekend to all of you. In our last session, which started with new chapter called Management of Working Capital, previous session में हमने क्या देखा? We learned कि this chapter is primarily bifurcated into four subparts. One is estimation of working capital, how to estimate, how to find the working capital that your business needs. We will learn that. Second is managing your receivables, managing your customers in such a way that maximizes the wealth of the owners. Third, we will learn about cash and treasury management. Under that sub part, we will see what is the optimum cash balance that your company, that your business should keep at any given point in time. And last but not the least, we will also see about payables management, whether to accept the discount given by creditors or we should pay at the end of the credit period. This we will learn in our last subpart. So we started with first subpart, estimation of working capital. Working capital का हमने मतलब देखा था. It is nothing but the funds that you need to run day-to-day business operations. Fixed assets, we also saw that fixed assets can never work on its own. You need smooth functioning of fixed assets. You need some extra amount. That was working capital. I gave you example of restaurant and it was crystal clear that what working capital means. Correct? फिर हमने इस चैप्टर के कुछ स्टैंडर्ड assumptions देखे. Standard assumptions are to be applied only when there is no other specific information given anywhere in the question. फिर we learned the format of working capital. Format of working capital simply consists of current assets less current liabilities. But that was more of an organized way or presentable way of solving working capital or finding working capital. After that we saw कि ये statement में जो raw materials की value है, स्टॉक ऑफ WIP की वैल्यू है, रिसीवेबल्स की वैल्यू है, वो कहां से आएगी? तो उसका सोर्स डॉक्यूमेंट हमने देखा, इट इज नथिंग बट कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट शीट. ठीक है. Along with cost sheet, we also learned the formulas to calculate each components of working capital. So this was our previous session. We saw one question, illustration number 1 from our module. We also discussed illustration number 2 from the module. वो हमने solve नहीं किया था. I gave you the task to solve. I don't know whether all of you have solved or not. I hope सबने किया हो. नहीं किया हो तो let's just quickly see that. Let me share my screen first. Okay, you all can see my screen, right? Acha, to estimate the working capital, we also see there are two approaches. One is total basis, one is cash cost basis. The difference between total basis and cash cost basis is very simple. Under cash cost basis, firstly, you just need to consider all the cost. It means profit को consider नहीं करना है. Cost में भी only those costs that would be paid in cash today or in future. ठीक है. So all non-cash expense you have to remove it. ठीक है. So moving to illustration number 4. The following figures related to XYZ Company Limited. Sales 2 months credit, material consumed, supplier extends 2 months credit. So my average collection period and my average payment period are same. Wages paid 1 lakh, 1 month lakh, so outstanding for 1 month.
Cash manufacturing expense. I told you this is factory overheads specifically which are paid in cash. Okay. Again, this is outstanding for 1 month. Admin expense, sales promotion expense, but it is paid 3 months in advance. Quarterly advance means 3 months in advance. GP is 25%. Depreciation considered as a part of cost of production. This line is trying to say that depreciation is included under factory overheads. Are you following? But यहाँ पे हमारे factory overheads is in the form of cash only. So इस 960 में include नहीं हुआ होगा. Are you following? So maybe your total factory overheads would be more than this amount. Total factory overheads. Are you getting this? What I'm trying to say? This 960 is cash component. So I mean total factory overheads में दो हिस्से होंगे. One is cash factory overheads, or you can say cash manufacturing expense. One is non-cash manufacturing expense. So they are saying depreciation, which is a non-cash manufacturing expense, is a part of this total factory overheads. ठीक है. But cash manufacturing expense जो 960 है, obviously इसमें तो depreciation नहीं include हुआ होगा. Are you getting this? So my total factory overheads would be 960 plus the amount of depreciation. Follow? अब वो कितना है? For the time being, it is irrelevant for us. For the time being. Stock of RM is 1 month and stock of FG is 1 month. So this is RM and FG holding period. Cash balance to be maintained is 1 lakh. Assume 20% safety margin. Compute working capital requirement on cash cost basis. Ignore WIP. Okay, so first step, prepare the format of working capital. So I will give the heading estimation of working capital. XYZ company and we are following cash cost basis. नाम current हो गया. Now what is working capital? Can I say it is nothing but current assets? Less current liabilities. So you can start preparing the format. Huh? Current asset mein first of all there would be stock. Stock in manufacturing business industry. There are three types of stock: RM, WIP, FG. But in this question, they have told us to ignore WIP. So in this question, specifically, there would be only two stocks: RM, FG. Okay. Then we would be having receivables. Then we have cash and bank balance. We also have other current assets. क्योंकि sales promotion expense is paid in advance. So यहाँ पे prepaid expense आएंगे. Total of all the current assets will be termed as gross working capital. उसमें से हम current liabilities minus करेंगे. Current liabilities में number 1 we have payables, जहां से हम raw material purchase करेंगे. We have other current liabilities. Other current liabilities में we have all outstanding expense. ठीक है. So if we deduct current assets में से current liabilities, it is termed as excess of current assets over current liabilities. Excess of current assets over current liabilities. We will add safety margin of 20% given in the question. And we will get working capital required or working capital needs.
So basic format is ready. ठीक है. Now to fill up this format, we will prepare cost statement. So working note 1, calculation or preparation of cost statement, or you can term it as income statement as well. Huh? ठीक है. So I will start with materials consumed. Then we have labor cost. Then we have factory overheads. Factory overheads here they have termed it as manufacturing expense. Since we are following cash cost basis, we will only include those manufacturing expense which are paid or will be paid in cash. ठीक है. I will get total cost of production. In absence of any information, can I say all activities accrue evenly throughout the year? So my opening stock, closing stock, be it of WIP, be it of raw material, be it of FG will remain same. I will add admin expense. I will add sales promotion expense. Total will be cost of sales. ठीक है. I will not add profit over here because I have to follow which basis? Cash cost basis. So my receivables will be based on cost of sales. ठीक है. So here my cost statement will end. So now let's just substitute the figures that we easily get from the question. सेल्स का अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है बिकॉज डेटर्स आर नॉट बेस्ड ऑन सेल्स, इट विल बी बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स. मटेरियल कंज्यूम 9 लाख. सो मटेरियल कंज्यूम 9 लाख. वेजेस 720. सो लेबर कॉस्ट 720. कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 960. सिंस दिस आर ऑलरेडी इन कैश फॉर्म, सो नथिंग टू डिडक्ट, एज इट इज लिख देंगे. अगर ये कैश फॉर्म में नहीं होता, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बोला होता, वी हैव टू रिमूव डेप्रिसिएशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इन दैट केस. अब सर डेप्रिसिएशन की हिंट तो कुछ बता ही नहीं है, सो इन दैट केस यू विल गेट सम हिंट ऑन डेप्रिसिएशन एज वेल. क्वेश्चन ही आपको वो हिंट दे देंगे. So my total COGS cost of production will comes to 9, 18, 25, 80. Admin 240, sales promotion 120. My total cost of sales comes to 25, 27, 28, 29, 40. Done. Now your base source document is ready. Just apply the formula now and find each and every component of working capital. फॉर्मूला का लॉजिक भी मैंने लास्ट टाइम सब समझा दिया था. सो नाउ वी विल जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला दैट वी हैव लर्न. कैन आई से स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज नथिंग बट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड which is how much 9 lakh into RM holding period. RM holding period is 1 month of stock is kept in the storage. So can I say 1 month? 1 divided by 12. कितना आया? 75,000. So any doubts, students, in finding the value of RM stock? Any queries, any concerns? 75, correct. FG is based on COGS. How much is our COGS? Can I say 2580? We will get this 2580 from our source document of cost statement. Again FG 2580, and again FG remains in my stock for 2580. एक जीरो ज्यादा हो गया. For 1 month, so 2580 into 1 by 12. कितना आ रहा है for FG? 2,15,000.
ठीक है. Any doubts in finding the value of FG stock? Just simply apply the formula now. Receivables. Ideally, receivables are based on sales. But since we are following cash cost basis, our receivables will be based on cost of sales. The actual amount blocked is not on sales, but my actual amount blocked would be in cost of sales, correct? So cost of sales is 2940 and credit given to my customers is 2 months. So into 2 by 12. कितना आया debtors receivables का amount? Why depreciation? We are following cash cost basis. So why depreciation will be added? क्यों करना है? कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया है और हमें कैश कॉस्ट ही लेना है. So why unnecessary you want to add and remove it? Yes, depreciation to be ignored. And question in manufacturing expense. The question में जो manufacturing expense दिया है वो ignore करके ही दिया है. You want to ignore and it is already ignored. Are you getting this? So unnecessary complication क्यों करना है? 490 is the amount of receivables. अगर टोटल बेसिस होता तो डेप्रिसिएशन लेना जरूरी था और उस केस में माय रिसीवेबल्स विल बी बेस्ड ऑन सेल्स अमाउंट. ठीक है, सेल्स जो है ना 36 लाख उस पे रिसीवेबल्स कैलकुलेट होता. कैश एंड बैंक बैलेंस ऑलरेडी गिवन 1 लाख. अदर करंट एसेट में वी हैव sales promotion which is paid in advance. Quarterly in advance means 3 months. Proportionate to 3 months of this 120, it is paid in advance. ठीक है. So can I say 120 का equivalent to 3 months is paid in advance. 12, 10, 30,000. Correct. So if I ask you what is my gross working capital, so when I say gross working capital is nothing but sum of total current assets. So 75 plus 215, 290, 690, 780, 880, 9,10,000. 9,10,000 is my gross working capital. So gross working capital 9,10,000. Current liability, payables. Payables means creditors. Creditors से मैं raw material खरीदूंगा and my raw material purchase amount in this question would be equal to my raw material consumption. क्योंकि opening stock of RM is equal to closing stock of RM. कितने का raw material I would be purchasing 9 lakh का and my suppliers grant me 2 months का credit. Can I say 1,50,000 is my payables का value? Yes or no? Other current liabilities. Other current liabilities में we will consider all the outstanding expenses. तो outstanding expenses में one is wages. ठीक है, which is for 1 month. So यहाँ हम लिखेंगे outstanding wages. So equivalent to 1 month, proportionate to 1 month of this total wages is my outstanding. So 720 into 1 by 12. 12, 6, 60,000. अच्छा, कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी आउटस्टैंडिंग है 9,60,000. Proportionate to 1 month of this 9,60,000 is my outstanding manufacturing expense. So 960 into 1 by 12. 12 8 is 96. Admin expense is also outstanding for 1 month, 2,40,000. So outstanding admin expense 2,40,000 into 1 by 12, 20,000. So since all these expenses were outstanding for 1 month, तो आप इसको एक साथ टोटल करके भी लिख सकते हो. You just add this 3
and multiply it by 1 by 12. Answer would be same. But इस क्वेश्चन में all the expenses are outstanding for 1 month. सब क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग 1 मंथ होगा ऐसा जरूरी नहीं है. सो इन दैट केस वी हैव टू बाइफरकेट इट एंड राइट इट डाउन. ठीक है. सो एक्सेस ऑफ करंट असेट्स over current liabilities would be, can I say, gross working capital minus all the current liability. How much is the total of current liability? 1 to 50, 3 lakh 10. Yes or no? 3 lakh 10 is current liability ka total. So excess of current assets over current liability would be 6 lakh. Getting it? Then we have to add safety margin at 20%. सेफ्टी मार्जिन क्यों ऐड करते हैं तो उसका लॉजिक भी आई एक्सप्लेन यू दैट दिस 6 लाख इज एन एस्टिमेटेड फिगर. हमें पता नहीं है कि हमें फ्यूचर में आने वाले साल में एग्जैक्टली 6 लाख वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगा कि नहीं. सो टू बी ऑन कंजर्वेटिव बेसिस we will add some safety margin and we will add 20% which comes to 1,20,000 and my working capital, final working capital needs would be 7,20,000. ठीक है. फाइनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड और वर्किंग कैपिटल नीड्स. Students, any doubt in this illustration? Before I add some twist, some mirch masala to this question, as of now, based on the current facts and figures, do you have any queries, any concerns in this question, illustration 4? Clear? Totally clear, all students? Okay. So let me add some mirch masala in this question and let's see how smart you all are. Okay? So this question, as far as the current facts are given in the question, is over. अगर ये डिट्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा तो आपका सोल्यूशन यहाँ खत्म हो जाता है. बट लेट्स से देयर इज सम ट्विस्ट, some mirch added for you all because you like things to be very spicy, right? So let's add some spice. I already just now told Aditya. Case in this question, all the outstanding expenses are outstanding for 1 month. So I told you, you can just sum up the all expenses and multiply it by 1 by 12. But sub question में ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वन मंथ से होगा ऐसा जरूरी नहीं है. सो इन दैट केस वी नीड टू बाइफरकेट. I explained that. Please pay attention when I'm explaining. ठीक है. So in this question you can just sum up and multiply it by 1 by 12. Okay. So let's just twist एक ही जगह पे. Instead of this cash cost, मान लो टोटल बेसिस होता तो हम कैसे सॉल्व करते हैं. दिस इज द ओनली ट्विस्ट. You understood my mirch masala? What I added? Only one. Everything remains same. सारे facts and figures remain same. Compute the working capital required on total basis. Ignore WIP. So हम क्या करते हैं? Depreciation to be considered. Okay. We will consider profit to calculate debtors. प्रॉफिट का काम किसके लिए? सिर्फ रिसीवेबल्स को सेल्स के बेसिस पे लेना है, इसलिए वी विल कंसिडर प्रॉफिट. करेक्ट. बट डेप्रिसिएशन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन? ओके, डेप्रिसिएशन हमें यहाँ पे ऐड करना है. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन? हाउ विल वी फाइंड दैट? You all are right. Depreciation sir consider करेंगे. But what is the amount? Did they give you the amount of fixed asset? Your fixed asset would be 10 lakhs. It will be used for 8 years. So 10 lakh divided by 8 SLM basis कर लेते. But ऐसा कोई डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में? बोलो. Does question provide any hints for you? हिंट ये है कि डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ योर प्रोडक्शन, मींस इट विल बी इंक्लूडेड इन फैक्ट्री ओवरहेड्स.
उतनी हिंट है. Profit percentage is there. Which profit percentage is there? GP. See, the hint lies over here in this statement. Can I say how is GP calculated? Can I say GP is nothing but sales minus COGS? Yes or no? This you are learning, you have seen this formula since childhood. बचपन से आप ये फॉर्मूला देख रहे हो. Sales is 36 lakh. GP is 25%. And in absence of specific information, GP is always based on sales. Whereas if sales is 100, so GP is 25% of this 100. So if total sales is 36 lakh, तो total GP कितना होगा? 9 lakh. Correct? Oh, 9 lakh. So can I say this balancing figure would be my COGS 27 lakh? Everyone, bolo, any doubt still here? So COGS would be my 27 lakh. So can I say my COGS, this amount would be my now 27 lakhs. Are you getting this? Yes or no? 27 lakh. So can I say here balancing figure would be my depreciation? Everyone understood? So यहाँ पे depreciation आ जाएगा. करेक्ट. डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 27 लाख माइनस 25 लाख 80,000. कितना? 1,20,000. फॉलोड दिस इज बैलेंसिंग फिगर. फॉलोड. सिर्फ टोटल बेसिस होता तो कॉस्ट स्टेटमेंट कैसे बनता? एवरीवन अंडरस्टूड? एंड इंस्टेड ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स आई विल एड प्रॉफिट and I will get my sales ka figure which is 36 lakh. So can I say my profit would be in that case 6,60,000 balancing figure. So understood the twist? If the question was to calculate or estimate working capital on total basis, तो कहा चेंज हो जाता? चेंज एक यहाँ पे होता. डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो कहना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 27 लाख में मैंने डेप्रिसिएशन ले लिया. यस और नो? सो दिस स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू नाउ. एंड नेक्स्ट इज वी विल एड प्रॉफिट टू कैलकुलेट डेटर्स. ठीक है. सो नाउ इन दिस केस वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन में कहा चेंज होता? So can I say now FG would not be on 25 lakh 80,000. It would be on 27 lakh because now we are following total basis. Yeah, are you following this? Everyone? Any doubt, students? Clear? So this amount would change. कितना आ रहा है? आई होप आपने पहले का सोल्यूशन लिख दिया बिकॉज नाउ आई एम चेंजिंग इन दिस फॉर्मेट ओनली. सो नाउ दिस बिकम्स टोटल बेसिस. एक फॉर्मेट में ही मैं दोनों बना रहा हूं. एक तीर दो निशाना है. कितना हो गया? 2,25,000. करेक्ट. 2,25,000 हो गया. रिसीवेबल्स नाउ विल नॉट बी बेस्ड ऑन 2940. इट विल बी बेस्ड ऑन सेल्स 36 लाख. 12,3 6 लाख हो जाएगा ये. So my gross working capital would come to, add करो, 225. This is 3 lakh plus 6, 9 lakh, 10 lakh, 10, 30,000, 10 lakh 30,000. So this will be 10 lakh 30,000 in that case. पेबल्स तो एज इट इज रहेंगे. नाउ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में मुझे 960 लेने का कि 960 प्लस 120 लेने का? बताओ.
Total manufacturing expense is now 960 plus 120 means 10 lakh 80,000. Are you getting this? And they are outstanding for 1 month. So tell me which figure should I take? 960 or 1080? Navneet, is depreciation outstanding वो जेब से जाता है कभी भी? How can depreciation be outstanding? It is a non-cash expense. So outstanding expense के लिए you have to apply a simple logic. It will be only 960. उसमें आप टोटल मत ले लो. Why? Because depreciation is non-cash expense. वो जेब से ही नहीं जा रहा तो outstanding prepaid कैसा? Are you following this? So students do mistake over here. Here they take total manufacturing expense of 1080, which is illogical. यार थोड़ा sense लगाओ कि how can depreciation be outstanding or prepaid? It is not paid only. So outstanding expense will be based on 960. ठीक है? So flow में सब नहीं ले लेने का, टोटल नहीं लेने का, ठीक है? Followed. So this is how your working would change. So 1080 minus 3 lakh 10. So my excess of current assets over current liability would come to 720. So what is 720? 1080 is my gross working capital and my total of current liability is 3 lakh 10. तो 1087, हाँ तो 720 आएगा ना. 770. ओके 770. ओके. And now this 20% will change. Now we will take 770 ka 20% means 144 and total would be 8 914 154. सॉरी क्या हो रहा है आज मेरे मैथ्स को. 154 and total will be 8 924 9.24. Yes. So this is how your working capital requirements would change if you follow total basis. Any doubts, any concerns, any queries? So I explained you this illustration by using both the methods. कैश कॉस्ट होता तो क्या हो जाता, एंड थोड़ा ट्विस्ट ले लेते, टोटल बेसिस लेते तो क्या होता. तो ट्विस्ट वाज ओनली इन फाइंडिंग दिस डेप्रिसिएशन अमाउंट. आर यू फॉलोइंग? if you get this click in your mind, then फिर तो क्वेश्चन सिंपल था. एंड अनदर ट्विस्ट वाज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. यहाँ पे हमें सिर्फ 960 लेना है, डेप्रिसिएशन ऐड नहीं करना है, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज नेवर पेड. जो चीज पेमेंट ही नहीं होती है तो उसका कहाँ आउटस्टैंडिंग और कहाँ प्रीपेड होगा. Yeah. So it's like this. If a person is not born only in this earth, then how can he be a boy or a girl? Are you following? वो पर्सन ही नहीं है, जन्म ही नहीं हुआ है उसका. हाउ कैन यू से इट इज अ बॉय और अ गर्ल? Followed, non-existent. It is like that. Okay. So I guess it is very clear. One more, total basis depreciation amount. Okay. Question says that GP ratio is 25%. ठीक है, क्वेश्चन में here they are saying GP ratio is 25%. How is GP calculated? You have learned this at lower level. GP is nothing but sales minus COGS. Correct? तो sales मेरा 36 lakh है, which is given in the question, and GP is 25% of this 36 lakh. तो कहने से मेरा GP 9 lakh आएगा. तो बैलेंस बचा हुआ 36 minus 9. Can I say this would be my COGS? Yes or no?
Now 27 lakh is my COGS. This is freezed. So find where do we write COGS in this cost statement? Locate करो COGS हमारे cost statement में कहाँ fall होता है? Can I say it falls after adding all this cost? तो कहने से मेरा COGS यहाँ पे टोटल आ गया 27 लाख, करेक्ट? By using the working note, by using our standard formula of sales minus COGS. हो तो सर मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस करेंगे तो हमारा 27 लाख होना चाहिए, यस और नो? बट सर यहाँ पे तो मटेरियल इज 9 लाख, लेबर इज 720, कैश मैन्युफैक्चरिंग इज 960 ओनली सर। ये तीनों का टोटल करे, इफ वी ऐड दिस, तो सर ये तो 2580 हो रहा है। आप बोल रहे हो 27 लाख होना चाहिए, तो सर बैलेंसिंग फिगर जो 120 आ रहा है वो क्या है? कैन आई से दैट वुड बी डेप्रिसिएशन फॉलोड बिकॉज इट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ, अंडरस्टूड नाउ? ना पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, दैट इज डन। उसमें दूसरा टॉपिक था वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल। So let's understand what does working capital operating cycle mean? Again, a very logical concept. First of all, let me ask you, have you heard of this term before, operating cycle? At lower level, at lower class? कभी सुना है आपने ये? Yes, production time and complete sale. Okay. Yes, sir. Days 365 से डिवाइड। नवनीत, यू आर गिविंग द वे टू सॉल्व। मुझे अभी फिलहाल हाउ टू सॉल्व इसमें इंटरेस्ट नहीं है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट उसमें इंटरेस्ट है। वाटर साइकिल कंटिन्यूस गोइंग ऑन। ओ ओके, नाइस। ओके, सो एवरीवन knows something about this concept, but let's understand again through a practical। जिसको नहीं पता है उसके लिए let me explain through very practical example, ठीक है? So now, first of all, what is operating cycle, working capital operating cycle? It means it is the process। ये पूरी एक प्रोसेस है। क्या है? टेक्निकल प्रोसेस है। किस चीज की प्रोसेस है? दिस प्रोसेस इज ऑफ कन्वर्टिंग कैश बैक इनटू कैश। क्या करना है? कैश को हमें वापस कैश में कन्वर्ट करना है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कैश बैक इनटू कैश इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल। सर इस प्रोसेस में दो दो बार कैश क्यों आ रहा है? दिस कैश इज द कैश दैट यू विल पे टू योर सप्लायर्स। आर यू गेटिंग दिस? कैश पेड टू सप्लायर्स। सो आज मेरे जेब से पैसा गया, किसको गया? सप्लायर्स को गया। क्यों गया? टू बाय रॉ मटेरियल्स। अंडरस्टूड? अब ये जो कैश आज गया वो वापस कैश में कन्वर्ट कैसे होगा? वो कहने से वो वापस कैश में कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ रिसीप्ट फ्रॉम कस्टमर्स होगा। Yes or no? So the process of the cash that is paid to the suppliers back into the cash that is received from the customers is वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल। सो अब आज के बाद आपको कोई भी पूछे व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग साइकिल, जस्ट से इट इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कैश इनटू कैश। ठीक है? कैश को वापस कैश में कन्वर्ट करने का प्रोसेस इज वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल। अब ये प्रोसेस को जो टाइम लगेगा ना, द टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस प्रोसेस, ये कैश को वापस कैश में कन्वर्ट करने के लिए जो टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल।
हाँ, wait, wait, I will give the example. Don't worry. You all, I feel, are little impatient in your lives. Trust me, I will give you example. Be have some patience, ठीक है? मैं कहा था, हाँ, time taken. See, such sometimes it breaks the link of the professor. Huh? It disturbs the link of the professor. Time taken to complete the above process is called duration of operating cycle. Is called as duration of operating cycle. ठीक है, सो पहले तो वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल क्या है सर? इट इज अ सिंपल प्रोसेस, कैश को वापस कैश में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। अब वो प्रोसेस को जो टाइम लगेगा वी कॉल इट एज ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। लेट्स से आई वांट टू स्टार्ट अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आई विल नीड रॉ मटेरियल्स। Okay, yes, we would need raw materials. Let's move ahead. So I went to my supplier's shop and I purchased raw materials with immediate payment. Are you getting this? So can I say आज मेरे जेब में से कैश चला गया? Yes or no? आज मैंने रॉ सप्लायर्स को कैश दिया एंड सप्लायर्स ने मुझे सामने क्या दिया? रॉ मटेरियल। तो कैन आई से माई कैश has taken the form of raw material? Yes or no? Now my cash is not in the form of cash. Now my cash is in the form of raw material. Followed? So आज डे वन पे मेरा कैश चला गया, जस्ट विजुअलाइज, एंड वो कैश देके मैंने क्या खरीदा? रॉ मटेरियल। नाउ वी आर फाइंडिंग कि ये जो मैंने आज कैश दिया सप्लायर को वापस मेरे जेब में वो कैश कितने टाइम के बाद आ जाएगा? We are checking that. We are finding that. ठीक है? So today I paid cash to the suppliers. I received raw materials from him, from his shop. So whereas my cash is now not in the form of cash, not in the form of hard cash. It is in the form of raw materials. ठीक है? Now tell me, क्या जैसे ही मैं तुरंत raw materials लेके आ गया सप्लायर से, within a second I will throw it into the production or I will hold it, store it for some time? क्या लग रहा है? Hold. Can I say I will hold this raw material for some time before issuing directly throwing into the production? So let's say my raw material storage period, raw material holding period before it gets into the production, let's say it is 15 days. So can I say at this point मैंने जो आज कैश सप्लायर को दिया वो 15 दिन में तो इट इज फॉर श्योर वो वापस नहीं आएगा। वाई? बिकॉज आज कैश दिया, रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल को ही मैं 15 दिन तक रख रहा हूँ गोडाउन में, तो 15 दिन इस तो मिनिमम मेरा कैश ये वापस नहीं आने वाला। ए अंडरस्टूड टिल ईयर? 15 डेज तो भूल जाओ वो कैश आएगा। फॉलोड? एनी डाउट्स टिल ईयर? आर यू एबल टू विजुअलाइज? सो कैन आई से फॉर श्योर 15 डेज के पहले तो आई विल नॉट रिसीव दैट मनी। सो आज मैंने जो जेब से कैश निकाला था आई कैन सी के 15 डेज के पहले तो मिनिमम मुझे मिलने ही नहीं वाला है। अंडरस्टूड? बोला? एनी डाउट स्टिल हियर? कैश लॉक्ड, यस, इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल फॉर 15 डेज। ओके, आफ्टर 15 डेज आई विल इश्यू इट इन द प्रोडक्शन। एक जैसे ही मैं प्रोडक्शन में डालूंगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो फिनिश गुड्स में बदल जाएगा कि प्रोसेस विल टेक टाइम? It will take time, right? So let's say process takes another 10 days to convert this raw material in FG. So can I say 10 days, 15 days, my cash was locked in raw material.
Now another 10 days. It is locked in the process. Are you following? So can I say 25 दिन तक तो मुझे नहीं दिख रहा है मेरा कैश वापस आएगा. आर यू फॉलोइंग दिस स्टूडेंट्स? आज मैंने जो जेब से कैश निकाला था वो मुझे अभी तो ऐसा दिख रहा है कि 25 दिन के पहले तो नहीं आने वाला. एवरीवन. So let's say process takes another 10 days. Clear till here? Okay. WIP process को 10 दिन लग रहा था. 10 days are completed and FG is ready. My final product, finished goods is ready. बोलो. जैसे ही मशीन से FG निकला वहां पे ही ऐसे कस्टमर्स हाथ लेके खड़े होंगे कि ला बन गया है. FG just give me the final product. It will take some time to convert this FG into sales, to convert the inventory, to turn over the inventory. Following? So let's say before this FG gets sold to the customer, I am storing this FG in my warehouse for 15 days. So can I say this is nothing but FG holding period? ओ तो सर आपने जो डे वन पे कैश जेब से निकाला था वो तो 15 डेज ब्लॉक हो गया रॉ मटेरियल में. वो तो 10 डेज ब्लॉक हो गया प्रोसेस में. वो तो और 15 दिन ब्लॉक हो गया FG को होल्ड करने में. तो 40 डेज तक तो मुझे नहीं दिख रहा सर आपका कैश वापस आएगा. 40 डेज तक तो कैश अलग अलग रूप ले रहा है. आर यू फॉलोइंग? For 15 days, it took the roop of raw material. For another 10 days, it took the roop of WIP. For another 15 days, Raudra roop of FG. Followed till here. Clear? Now, once FG is sold to my debtors, my customers, will they pay me on the spot? Or as per industry standards, as per industry practice, I would need to give some credit to them. मुझे बिजनेस में मुझे इंडस्ट्री में टिकना हो. इफ आई वांट टू बी स्टेबल, गेट स्टेबल इन द इंडस्ट्री, आई हैव टू गिव क्रेडिट. आर यू गेटिंग दिस? सो ये FG सोल्ड हो गया रिसीवेबल्स को. फॉलोइंग. सो इवन रिसीवेबल्स विल नॉट पे मी ऑन द स्पॉट. आज मैंने गुड्स बेचा तो दे विल आस्क भाई मुझे क्रेडिट दे वरना मैं दूसरे मैन्युफैक्चरर के पास जाऊंगा. बहुत मैन्युफैक्चरर है तेरे जैसे तो. So when I say amount will get blocked in receivables as well, that is called as receivables holding period or average collection period. So let's say receivables ask for minimum 30 days. Oh, तो कहना है से आज on day one मैंने जो पैसा भरा था to the supplier, पहले 15 दिन was in the form of raw material. Another 10 days was in the form of WIP. फिर और another 15 days was in the form of FG. Or 30 days in the form of receivables. So can I say after 70 days जो मैंने डे वन पे कैश भरा था, आफ्टर 70 days इट इज गेटिंग कन्वर्टेड बैक इनटू कैश. तो ये जो पूरी साइकिल चल रही है ना, यानी रिसीवेबल से वापस कैश, दिस एंटायर साइकिल इज कॉल्ड एज conversion of cash cycle, or you can also term it as operating cycle. Followed? So now once the cash is received from receivables, फिर तो this cycle will go on and on and on and on and on. Are you getting this? So ideally, in this example, can I say you have to just manage the funds for 70 days? Means if you are able to get funding for 70 days, आपकी साइकिल रेगुलर चलने लगेगी. Are you following? So this 70 days is nothing but oiling to your cycle. हम जैसे हमारी बाइसिकल में ऑयलिंग करवाते थे ना, वैसे दिस इज एक बार 70 डेज का फंडिंग मिल गया फिर तो ऑयलिंग मिल गया. मीन साइकिल नाउ विल go on and on and on till
the end of your business life. Followed everyone? वैसे साइकिल ऐसे चलेगी. Zoop. 1, 2, 3, zoop. Followed everyone? Say 70 days is nothing but the time taken for my cash that I paid on day one to get converted back into cash that I received from my customer. Followed? Any doubts, any concerns in this? Yes, cash back in cash. Followed everyone? बोलो इसमें कोई डाउट है एग्जाम्पल में? आई होप यू ऑल वर एबल टू विजुअलाइज. अब एक क्वेरी आ सकता है. कैन आई से इन दिस केस मैंने ना रॉ मटेरियल्स ऑन कैश बेसिस खरीदा था. मींस आज आई एम बाइंग द गुड्स, आई एम पेइंग द कैश टुडे. बट कैन आई से एज पर इंडस्ट्री प्रैक्टिस, जैसे मैं मेरे कस्टमर्स को क्रेडिट देता हूं, मैं भी उसी सप्लायर के पास जाऊंगा हु गिव्स मी द क्रेडिट. यस और नो? हु गिव्स मी सम टाइम टू मेक द पेमेंट. आर यू फॉलोइंग दिस? एवरीवन गेटिंग इट? सो कैन आई से उसमें से दिस इज कॉल्ड एज नाउ ग्रॉस ड्यूरेशन. And this duration, gross duration, starts from the buying of raw material. Not the payment of raw material, but buying of raw material. Means मैंने आज जो raw material खरीदा, वहां से मेरा ऑपरेटिंग साइकिल का ड्यूरेशन स्टार्ट हो गया. बट कहने से आज मैंने ये खरीदा है डे वन पे. आई विल नॉट बी मेकिंग द पेमेंट ऑन डे वन इट सेल्फ. आर यू फॉलोइंग? आज तो मैंने खरीदा है एंड आज से मैं 15 दिन तक स्टोर करके रख रहा हूं. माई साइकिल हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, फ्रॉम द डेट ऑफ बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल. बट आज मैंने पेमेंट नहीं किया. आई वॉन्ट टू सी माई. एंड वॉट इज साइकिल? साइकिल इज द डेट फ्रॉम विच यू पे द कैश. आर यू फॉलोइंग? सो कहना से इसमें से मुझे क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड माइनस करना पड़ेगा, एवरेज पेमेंट पीरियड. Yes or no? To find the actual amount blocked or to find the time for which my amount is getting blocked. So let's say creditors give me 20 days credit. So आज cycle तो आज से start हो गई from the date of purchase. So if we start the cycle today, so you can see कि 70 days का operating cycle का process है. But can I say ideally 70 days नहीं, इसका आज buying किया है तो इसका payment तो 20 दिन बाद होने वाला है. So my cash will go out after 20 days. Are you following? And operating cycle में तो हमें वही देखना है कि कैश कब से बाहर जा रहा है. So in that case we subtract average payment period and we find net duration of operating cycle, which is 50 days. Are you following? In my example, I had assumed कि आज मैं सप्लायर को पैसे दे रहा हूं और आज ही गुड्स ले रहा हूं. But ideally, even suppliers would be giving me some credit, so that credit would get subtracted. Are you following this? Everyone. So can I say बातों बातों में we learned the formula of duration of operating cycle. What is the formula of duration of operating cycle? Can I say it is nothing but RM holding period plus WIP holding period plus FG holding period plus average collection period less average payment period. This is the formula to calculate net duration of operating cycle. Understood? अगर gross duration पूछा है तो again you just add the duration of all current assets. Following? Just like we saw in our estimation का format. Gross working capital is sum of total current asset. So gross duration will be sum of total current asset का duration. बोलो any doubts still here? Understood what is meant by operating cycle and
how to calculate the duration of that cycle. क्लियर, क्रिस्टल क्लियर. ये ऑपरेटिंग साइकिल को है ना लेमैन में रोलिंग बोलते हैं, रोलिंग. आई डोंट नो इफ योर फादर is into business or not, but ideally, in Gujarat specifically, most of banyas are into business. ठीक है? So whenever some suppliers call them and ask for payment ना, what they say कि यार अभी पैसा अरेंज नहीं हो पाएगा. Why? Because वो रोलिंग में अटका पड़ा है. So what is this rolling? The businessman is trying to say rolling means या इस साइकिल में कहीं अटका पड़ा है पैसा. Are you following? Rolling is nothing but operating cycle. रोलिंग में पैसा ब्लॉक हो गया है. What are they trying to mean by this rolling? Rolling is nothing but इस साइकिल में कहीं पे फंस गया है. तो जैसे इस साइकिल में से पैसा रिलीज होगा, आई विल जस्ट रिलीज योर पेमेंट. टोटल सीए का ड्यूरेशन, टोटल करंट असेट का ड्यूरेशन इज कॉल्ड एज ग्रॉस ड्यूरेशन. And it starts right from the day you purchase the raw material. Right from the day you purchase the raw material. उसका पेमेंट कब कर रहे हो, दैट इज ओवर ईयर. दैट विल बी गेट कवर्ड ओवर ईयर. I hope this is clear. Conversion of cash cycle. Yes, you can call it as conversion of cash cycle. Now you can give whatever name you want to like to give. आपको जो मन में आ रहा है वो नेम दे सकते हो. जस्ट इट शुड रिलेट विद द कॉन्सेप्ट. यस, मिनिमम द बेटर. बिकॉज ये जितना जल्दी रिलीज होगा और इन अदर सेंस पैसा मेरा इसमें ये साइकिल में जितना कम ब्लॉक होगा, जितने कम पीरियड के लिए ब्लॉक होगा, इट इज बेटर. आर यू फॉलोइंग? सो लेट्स जस्ट क्विकली सी व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल. सी, कैन यू सी? यहां पे उन्होंने ऐसे साइकिल बनाई है इन सर्क्यूलर फॉर्म. मैंने साइकिल ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाई है. बट इट इज दे आर ट्राइंग टू मीन वन एंड द सेम. ठीक है? So if you collect the receivables faster, can I say your duration of cycle will get less? Collection of receivables faster means ये 30 days की जगह आप 10 दिन में collect कर रहे हो. When I say duration will be less, you will release the cash from the cycle faster. Collect the receivables slower, your cash would be soaked up. Soaked means block हो जाएगा. Get better credit terms from supplier. तो कहना है उतना लेट पेमेंट करोगे, यू विल इंक्रीज योर कैश रिसोर्सेस. इन्वेंट्री मूव्स फास्टर मींस एफजी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सेल्स फास्टर. उतना जल्दी पैसा रिलीज होगा. आर यू फॉलोइंग? जितना कम होल्डिंग पीरियड, उतना फास्ट रिलीज ऑफ कैश. मूव इन्वेंट्री स्लोअर, यू विल कंज्यूम मोर कैश. एनी डाउट्स स्टूडेंट्स? Clear? Working capital operating cycle as far as conceptual understanding is concerned. इसमें कोई क्वेरी है? ड्यूरेशन क्या होता है, इसमें कोई क्वेरी है? Now next task would be to calculate. See, in some of the question you will be given these figures directly. एंड पूछेंगे कैलकुलेट ग्रॉस ड्यूरेशन, कैलकुलेट नेट ड्यूरेशन. तो उसमें यू हैव टू जस्ट सिंपली एड अप द ड्यूरेशन ऑफ करंट असेट्स minus average payment period and you will get net duration. But in some of the questions, they will not give this data directly. They will ask you कि 15 days कैसे कैलकुलेट करना है, how to find this 10 days, how to find this 15 days of FG holding period. Likewise, ACP and APP. Followed? So our next step is to learn the formulas to calculate
to calculate holding periods, collection periods, and payment period. And I hope you already know this. एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है, एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है, यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन रेशियोज चैप्टर. ठीक है, आपने ऑलरेडी सीखा है. Okay, so let's start with average collection period because this you have already learned. How to calculate average collection period? What is the formula that you have learned in ratios chapter? बता सकता है मुझे कोई? Let's see how many of you recollect. बोलो. Yes, now tell me na. What was the formula that you have learned for ACP? Can I say it was nothing but average debtors upon net credit sales into 12, 365, 52. ये फॉर्मूला आपने सीखी थी. Yes, average receivables upon sales per day is nothing but average debtors upon net credit sales into 12, 365, 52. Correct? ये फॉर्मूला सीखी थी. एवरेज पेमेंट पीरियड की क्या फॉर्मूला थी? कैन आई से इट वाज नथिंग बट एवरेज क्रेडिटर्स and my payment period, my payables are based on purchases. So यहाँ पे हम net credit purchases लेते थे into 12, 365, 52. If you want your answers in months, then multiply it by 12. If you want answer in days, multiply it by 365. And if you want answer in weeks, multiply by 52. Correct? So likewise, see, when I say ACP is nothing but receivables holding period. एपीपी का दूसरा नाम है पेबल्स होल्डिंग पीरियड. तो लाइकवाइज हम आरएम होल्डिंग पीरियड की फॉर्मूला बना सकते हैं. आरएम होल्डिंग पीरियड कैन आई से विथ सेम प्रिंसिपल एंड लॉजिक, आरएम होल्डिंग पीरियड विल बी एवरेज आरएम स्टॉक. And can I say raw material is based on, raw material holding period is based on raw material consumption into 12, 365, 12. Sorry, 52. Followed with same logic. ACP is nothing but debtors holding period. Debtors holding period is nothing but average stock of debtors, you can say. Average debtors is average stock of debtors for easy understanding. Likewise, we can prepare formula for WIP holding period. Can I say WIP holding period is based on cost of production? So denominator में cost of production आएगा and numerator में I will get average WIP stock into 12, 365, 52. Followed. Likewise, FG holding period. Can I say FG is based on COGS? So denominator will be COGS. WIP is based on cost of production. तो denominator में cost of production बन गया. Raw material is based on raw material consumption. तो RMC denominator में आ गया. Creditors are based on credit purchase. तो denominator में credit purchase आ गया. Average collection period is based on credit sales. Denominator में credit sales आ गया. Followed? And here numerator would become average FG stock into 12, 365, 52. Followed everyone? So this is the formulas to calculate this duration of all
कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन में ये डेज डायरेक्ट ना दिए हो या मंथ्स डायरेक्ट ना दिए हो, हाउ टू कैलकुलेट देन वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूले। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? एनी डाउट्स, एनी कंसर्न्स, एनी क्वेरीज? So crystal clear with this concept of working capital operating cycle? इसमें कोई क्वेरी है? बिफोर मूविंग टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फॉर दिस कॉन्सेप्ट, इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल का प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, सो आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। सो लेट्स टेक इलस्ट्रेशन that how to solve problem on working capital operating cycle. So see, can you see the formula? What is this? R is nothing but raw material holding period. W is nothing but WIP holding period. F is FG holding period, debtors collection period, less creditors payment period. With this concept and base, let's solve illustration number 2. Page number 9.20. One of the methods for forecasting working capital requirement is based, oh sorry, I am reading this. I have to read this. Illustration 2. From the following information of XYZ, calculate net operating cycle period. Can I say they are asking net duration of operating cycle? Yes or no? So how to calculate net duration? Raw material holding period, WIP holding period, FG holding period, debtors holding period, ये सबको ऐड करो, उसमें से एवरेज पेमेंट पीरियड माइनस करो, ठीक है? एंड कैन आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर। ओके, सो टू क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, लुकिंग एट द क्वेश्चन, हैव दे गिवन दिस डेज मंथ्स वीक्स डायरेक्टली? आरएम होल्डिंग पीरियड डायरेक्टली दिया हुआ है, WIP होल्डिंग पीरियड डायरेक्टली दिया हुआ है, नहीं दिया है, FG होल्डिंग पीरियड डायरेक्टली दिया है, नहीं दिया है, बट दे हैव डायरेक्टली गिवन ACP and APP. Are you following? So though two figures are directly given, three figures we have to find. Okay, so let's start with illustration number 2. Calculation of operating cycle period. If they just mention this word operating cycle period, it means net operating cycle period. Huh? अगर ग्रॉस ड्यूरेशन पूछना होता तो दे वुड स्पेसिफिकली मेंशन इन द क्वेश्चन कि कैलकुलेट ग्रॉस ड्यूरेशन और ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। इफ दे हैव जस्ट मेंशन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, दे आर ट्राइंग टू आस्क यू नेट ड्यूरेशन, ठीक है? सो ये ध्यान रखना। Okay, so can I say net operating cycle period is nothing but raw material plus WIP, HP is holding period, huh? Plus FG plus ACP minus APP. ठीक है? अब इसमें से ACP, APP is directly given. Our task is to find holding period for each of the three stocks. Okay, so let's use the formula. How to calculate raw material holding period? Can I say raw material is based on raw material consumption? Yes or no? ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में एवरेज RM स्टॉक, since ACP and since number of days is given, we will multiply it by 360 instead of 12 and 52. ठीक है? So just see the formula of RM holding period. Average RM stock divided by raw material consumption into 12.
एवरेज आरएम स्टॉक गिवन इन द क्वेश्चन, यस 50,000। अच्छा, एवरेज आरएम स्टॉक ये डायरेक्टली नहीं दिया होता तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज स्टॉक कैन आई से इट इज नथिंग बट ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ठीक है, सो 50,000 पूरे साल में माई रॉ मटेरियल कंजम्पशन इज 6 लाख इंटू 360, हाउ मच इट इज? कितना आया? 30 days। ठीक है, सो दिस इज 30 days। सो हियर आई विल जस्ट राइट दिस एज 30 days। अब हम जाते हैं WIP होल्डिंग पीरियड में। WIP होल्डिंग पीरियड इज नथिंग बट एवरेज WIP stock, and WIP is based on cost of production into 360. Average WIP stock is given 30,000. Oh, cost of production is also directly given 5 lakh. 60,000 divided by 5 lakh into 360. 21.6. Yes, you can round it off to the complete day. So 22 days approx. जिसको यहाँ पे 21.6 लिखना हो, दे कैन राइट 21.6, दे कैन डू राउंडिंग ऑफ टोटल में कर सकते हो, राउंडिंग ऑफ टोटल में भी कर सकते हो, इंडिविजुअली भी कर सकते हो। FG होल्डिंग पीरियड, FG होल्डिंग पीरियड इज नथिंग बट एवरेज FG स्टॉक finished goods is always based on COGS into 360. Finished stock held, average stock 40,000, COGS is 8 lakh. So 40,000 divided by 8 lakh into 360. 18 days. So when I say I found all the 3 days, or all the three holding periods plus 18 days. ACP is directly given 45, APP is given 30. 45 days, ये डी लिखने से कंफ्यूज हो रहा है, प्लस 45 minus 30. So how much is my operating cycle period? 85 days. Net operating cycle period. Means can I say अगर जेब से आज कैश निकल रहा है तो it will get converted back into cash after 85 days. Are you following? Means in other words, if I'm able to arrange funding for these 85 days, my job is done. जो पैसा मुझे 80, जो कॉस्ट के लिए, जो वर्किंग कैपिटल के लिए मुझे पैसा चाहिए वो 85 डेज के लिए अरेंज कर दिया, फिर तो रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो 85 डेज इज फॉर वन साइकिल। आर यू फॉलोइंग? एक साइकिल को 85 डेज लग रहा है। तो ऐसे दे हैव आस्क्ड हाउ मेनी साइकिल्स वुड बी देयर इन अ ईयर? वन साइकिल 85 डेज, तो 360 डेज में कितनी साइकिल कंप्लीट होगी? दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड इन पार्ट बी। आर यू गेटिंग दिस? therefore number of operating cycles in a year, can I say it would be 360 divided by 85? Yes or no? So 4.23 cycles. Yes or no? Acha, so to calculate number of operating cycles in a year, either you use this cross multiplication का logic, और आइदर इस लॉजिक से आप एक फॉर्मूला ही बना दो, so that that formula can be used for lifetime. कहने से फॉर्मूला क्या होगी? नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल की, it would be 365, 12, 52 divided by
net operating cycle period. Yes or no? Divided by net net ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड. तो ये फॉर्मूला बन गई 360 divided by 85. What was 85 days? Can I say it was nothing but net operating cycle period for one cycle? Yes or no? So ये फॉर्मूला बन गई. अदरवाइज यू गो विद दिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का सिंपल लॉजिक. हाँ, क्वेश्चन में 360 नहीं दिया होता तो यू हैव टू टेक 365. बट इफ स्टिल someone is like कि नहीं मुझे तो 360 लेना है, then you just write a note at the end that a year is assumed of 360 days. Followed? So it's fine if you take 365 if nothing is mentioned. But still, if you want to use 360 days, then write a note that in absence, a year is assumed to be of 360 days. Understood, students? Operating cycle period, practical problem on operating cycle period. Let's just solve one more question on this operating cycle period. Then we will move to next topic, financing of working capital. ठीक है, मैंने एस्टिमेट तो कर लिया कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए. अब उसको मैं फाइनेंस कैसे करूंगा? सो वी विल अंडरस्टैंड. दैट इज अ थियरी पार्ट, बट वी विल अंडरस्टैंड दैट. So one more problem on this operating cycle and we will move to next topic. उसके बाद time permits, I will solve one more question because I feel that would be important. Everyone, please come to practical problem number 1. It is on page number 9.116. ठीक है. सी आपके मॉड्यूल 2 में है ना, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ओपन करोगे ना तो देयर आर मेनी पार्ट्स. तो उसमें सिलेक्ट द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल. फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल में सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है. तो उसमें यू कम टू पेज नंबर 9.116. Question number 1, everyone. From the following information of R Limited for the year ended 31st March. So this is the information given. Balance sheet as on 31st March 2022 is given along with comparative balance sheet as of 2021. You are asked, you are to take 1 year as 365 days. So here they have specifically told us to take 365 days. Calculate net operating cycle, calculate number of operating cycle, and calculate amount of working capital. Forget this part 3 for now. But can I say we can easily solve part 1 and 2? We have clearly understood that. So let's do that. This is practical problem number 1. Okay. Part 1 is about net operating cycle period. So net operating cycle is nothing but RM holding plus WIP holding plus FG holding plus ACP minus APP. ठीक है. Now let's focus on RM holding period. How to calculate RM holding period? Average RM stock upon raw material consumption. And now we will take 365.
So even if you don't write the formula, that's fine. You can directly solve by taking the numbers. So can I say my average RM stock would be 45 plus 65 divided by 2? Yes or no? 45 plus 65 divided by 2. The whole upon raw material consumption. My annual raw material purchase would be my annual raw material consumption because of the standard assumption below. How much would be my raw material assumption consumption in this case? Would it be 400 lakh or would it be something different? Yes, opening plus purchase less closing. Are you following? So raw material consumption. Here the stock value is not same if you see. Raw material opening stock is different, closing is different. So can I say यहाँ पे standard assumption number one does not hold true? Yes or no? So यहाँ पे purchase will not be my consumption amount. Or rather inverse, consumption will not be my purchase amount. So consumption would be opening RM stock plus purchase less closing RM stock. Opening RM is 45, purchase is 400, closing is 65. So how much is my raw material consumption? 380. So denominator में 380 into 365. So tell me how much is my raw material holding period? 52.82. Let's take it to 53 days. ठीक है? So यहाँ पे raw material comes to 53. WIP. WIP की formula is average WIP stock. So can I say average WIP stock would be 35 plus 51 divided by 2? And raw WIP is always based on cost of production. Cost of production is direct 450. यही चाहिए मुझे. Followed into 365. So tell me how much is my WIP holding period? HP, this is not WIP. 35 days. 35 days. So 53 plus 35. FG holding period. Average stock of FG 60 plus 70 divided by 2. 65 आएगा. And FG is always based on COGS, which is 525. To 365. 45 ki 47. Please, 45. Navneet, your answer is wrong then. सबका 45 आ रहा है. So FG is 45. Average collection period. Can I say it is nothing but average debtors? Average receivables is 112 plus 135 divided by net credit sales. All sales are on credit. Huh? So 112 plus 135 divide by 2 divide by the whole divide by 585 into 365. So ACP comes to 477 days. ACP comes to 77 days. So यहाँ पे ACP is 77 and minus APP. APP is average creditors 68 plus 71 divided by 2. The whole divided by. Creditors are based on credit purchase. Can I say 400 is my credit purchase and entirely on credit? 400 into 365, which comes to 63.4 days.
So you can round it off to 63 days, हाँ चलेगा. Either you can round it off to 64 days तो भी चलेगा, 63 days तो भी चलेगा. I'm taking 63. So how much is my net operating cycle period? हाँ, लेस देन 0.5, बट लॉजिकली सोचो ना, 63 डेज तो पूरा काम किया, बट 0.4 डेज एक्स्ट्रा काम करूंगा तो ऑलमोस्ट एंटायर डे. इफ यू स्टडी 10 hours इन अ डे तो भी पूरा दिन जाएगा, एंड इफ यू जस्ट स्टडी 1 hour इन अ डे तो भी पूरा दिन चला गया ना आपका. बाकी 9 घंटा आपने वेस्ट कर लिया पर पूरा दिन तो चला गया ना. सो दैट लॉजिक इज ऑल्सो करेक्ट. नेट ऑपरेटिंग साइकिल इज हाउ मच? 46. 147 डेज. इसका 46 आ रहा था किसी का तो. 147 days. ठीक है, सो वी कैन जस्ट चेक आवर आंसर्स. हाँ, 146. 147 days, ठीक है. यू कैन यूज 64, आई टोल्ड यू बोथ इज फाइन. ठीक है, सो नंबर ऑफ सॉरी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इज 147 days. Number two, number of operating cycle. Now I can directly use the formula. Number of operating cycle is nothing but 365 divided by net operating cycle period. So पूरे साल में ऐसे कितनी साइकिल, मैं कितनी बार साइकिल चलाऊंगा, तो कहना है 365 डिवाइड बाय 147, विच कम्स टू 2 पॉइंट कुछ आ रहा था, 2.48 टाइम्स. सो 2.48 टाइम्स नहीं, 2.48 साइकिल्स. दिस इज नंबर ऑफ साइकिल्स. ठीक है, सो 2.48, they have rounded off to 2.5. Understood everyone? Part 2. Got it? Okay. Now let's see part 3. Part 3, amount of working capital required. Can I say, first of all, working capital required will be based on what is my amount blocked. आर यू गेटिंग दिस? पहले मेरा टोटल अमाउंट ब्लॉक कितना है वो तो देखू. तो कहना है मैं अमाउंट ब्लॉक्ड इज ऑन ऑपरेटिंग कॉस्ट, the cost, the fund that I need to run my day to day business. Are you following? So, first of all, total amount block annually in my operating cost, in my cost to run day to day business is, can I say how much? 325. 325 lakhs. Can I say this is for entire year? This is annual figure. पूरे साल का है. Yes or no? पूरे साल means, can I say, in short, it is nothing but for 2.48 cycles. Are you following? Because मेरे पूरे साल में 2.48 cycles होने वाली है. तो 2.48 cycles के लिए annual operating cost would be 325 lakhs. But can I say, if I am able to arrange for one cycle, फिर तो रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा. इफ यू आर एबल टू अरेंज फंड्स ओनली फॉर 147 days, इट इज इनफ फॉर यू. फिर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा, डेटर से पैसा आया, रॉ मटेरियल लो, एंड रोलिंग स्टार्ट्स. आर यू गेटिंग दिस? सो हाउ मच इज द फंड्स नीडेड फॉर वर्किंग कैपिटल? Everyone followed this? So 131 is the amount that you need. 131 lakhs, 130 lakhs. ठीक है. So what was this amount of working capital required? It will be
Annual operating cost divided by number of operating cycles in a year. If we are able to manage funds for one cycle, our job is done. बस उतना फाइनेंस रेस करो, उतना वर्किंग कैपिटल रेस करो, फिर तो रोलिंग स्टार्ट होगा. Followed. So annual operating cost is 325 lakh. Funds that I need annually to run day-to-day business operation divide by 2.48. कितना आ रहा था? 131 lakhs. Understood? Students, question number one, practical problem, which was on operating cycle. So operating cycle, may these are the different types of question which we have seen. So bolo, now operating cycle concept clear to all. Can we move ahead, move on in life? Can we proceed further? Yes. So third part, third subtopic, financing of working capital. And this part, this financing part comes only when you first estimate the amount of working capital. ये वही नहीं आ रहा है आपको हाउ टू एस्टिमेट, तो फाइनेंसिंग तो भूल ही जाओ. आर यू गेटिंग दिस? पहले आपको पता ही नहीं है कितना फंड रेस करना इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो कौन से सोर्सेज से फाइनेंस करोगे, दैट इज तो आउट ऑफ द बॉक्स फॉर यू. फॉलोइंग? So first step is always to learn how much working capital on estimated basis I would need. फिर हम सोचेंगे कौन से सोर्स पे जाए to finance that. Are you following? Practically, most of the working capital requirements are funded through short term sources. Working capital loan है, cash credit है, इससे funding करते हैं. But there are some different opinions as well, which are also logical at their end. So let's understand. Okay, so what does this opinion say? This says that working capital ideally can be divided into two types. Two types. One is permanent working capital, and one is temporary working capital. Permanent and temporary working capital. Permanent working capital means that working capital which is required at all the times till your business is on. And temporary working capital, you can call it as seasonal working capital. It will not be required throughout the year, but for some months, you would need this additional working capital. Are you getting this? Let me give you an example. I have ice cream shop, okay? My business is to sell ice creams to the customers. So can I say for all the 12 years or 12 months, I would need a fixed working capital to run my day-to-day ice cream selling ka business? Yes or no? So that working capital will be termed as permanent working capital. But when summer season comes, when the temperature of the world rises during April, May, can I say I would need more stock of ice cream in my shop because उसकी demand तब ज़्यादा होगी. So for 2-3 months, I will need more working capital, and that working capital that you need for additional 2-3 months, not additional 2-3 months, but for that 2-3 months of peak season is called as temporary working capital. Gold jewelry business. Round the year, I would be selling some jewelry, and round the year, I would need some fixed permanent working capital. But during Diwali season, during Dhanteras, my gold business shoots up, jewelry की demand ज़्यादा होती है. So in that case, for that Diwali period, I would need some extra working capital. And that extra working capital would be termed as seasonal working capital or temporary working capital.
Are you following? So this is variable. It depends on the season. But this permanent is fixed. Are you following? Everyone. So now what the scholars say कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल आपको परमानेंटली चाहिए बिजनेस के लिए तो go it for long term sources. This is their opinion. Are you following? So raise the working capital that you need permanently through long term sources. And this is temporary, the temporary working capital that you need for short period of time. You raise it through short term sources. Are you following? So this is a conservative approach of raising or financing working capital. Following? So इसको चार्ट फॉर्म में रखना हो तो चार्ट लुक समथिंग लाइक दिस. This is permanent working capital that you need throughout your business life cycle. Fixed, इतना तो लगेगा ही लगेगा. I will, even though my ice cream is not getting sold out, मैं ice cream shop बंद नहीं कर दूंगा. Are you following? So there would be some portion of working capital that will be needed throughout the life of business cycle. But during summer season, oh, this shoots up. Requirement of working capital would be shooting up. Why? Because more stock of ice cream would be needed. During winter season, zup, ये परमानेंट से कम नहीं होगा. कुछ तो स्टॉक रखूंगा ही. So during winter season, during monsoon season, again some mood is getting freshed up. So this is temporary working capital. Ka chart. Are you following this, students? So permanent working capital, you raise it through long-term sources as a conservative businessman. Because ये आपको permanently चाहिए throughout the life. And temporary working capital you need for only short period of time, then raise through short term sources. ठीक है. बिकॉज ये टेम्पररी वर्किंग कैपिटल आप लॉन्ग टर्म से रेस करने गए ना तो महंगा पड़ेगा. आर यू फॉलोइंग दिस? सो दिस इज all about the relevant theory as far as financing of working capital is concerned. A fixed cost is out of working capital. A fixed cost is investment decision whether to buy the machine or not. It is out of question. Just assume ice cream shop. If for round the 12 months कुछ तो आइसक्रीम का स्टॉक रखना पड़ेगा ना. I am running an ice cream shop. So for entire 12 months there I have to keep some stock of ice cream. So that inventory of ice cream ka cost would be permanent working capital. But during peak summer season, वो आइसक्रीम का स्टॉक डबल ट्रिपल करना पड़ेगा. So that additional working capital is टेम्पररी. सो इट हैज नथिंग टू डू विथ फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट का तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आएगा वेदर टू इन्वेस्ट इन द मशीन और नॉट, वेदर टू बाय द मशीन और नॉट. दिस इज वर्किंग कैपिटल, funds that you need for daily operations. Yes, correct. फिक्स्ड कॉस्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं तो यू फॉलो इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर. And fixed costs are ideally raised through long-term sources because fixed cost or machinery or factory would be there in your business till the lifetime your business is running. Followed, so they are generally raised through long-term sources. So this was topic 3, financing of working capital. Any queries, any doubt? This was more of a theory aspect. But still it is there in your syllabus. I have covered that. Any doubt, student? Any of the any of you have any confusion in life? What is going on? Everything clear? Smooth? Okay. So let's solve
one question where standard assumption number one will not hold true means opening stock, closing stock की value would be different. Let's solve that. How to deal with such question? How to catch the hints from the question? अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उसमें कहीं पे भी हमने ऐसी हिंट नहीं देखी कि स्टैंडर्ड assumption नंबर वन इज होल्डिंग ट्रू और नॉट. बट नाउ वी हैव टू कैच सम हिंट्स. Let's solve that. And then we will move on in our life. So practical problem number 5. Everyone come to practical problem number 5, page 9.119. AMA Limited is commencing a new project for manufacturing of plastic component. Cost information has been ascertained for annual production of 12,000 units, which is full capacity. So my capacity in the factory is of 12,000 units. But my 12,000 units ही produce करूंगा, it is not necessary. Yeah? This is the capacity. I would be producing as per the demand in the market. ठीक है? हाँ बट मेरे फैक्ट्री में मैक्सिमम मैं 12,000 यूनिट्स तक प्रोड्यूस कर सकता हूं. दिस इज द कॉस्ट पर यूनिट. एवरीथिंग इज गिवन. कैन आई से योर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ये जनरली एडमिन कॉस्ट सीओपी के बाद आता था, सीओजीएस के बाद आता था. But can I say here it is forming part of cost of production? How did I get to know this? Here, can you see the following cost information as certain for production is as below. तो प्रोडक्शन के लिए कौन से पर यूनिट कॉस्ट लग रहे हैं, तो उसमें फिक्स्ड एडमिन भी आ गया. अंडरस्टूड. सो इन दिस क्वेश्चन वन ट्विस्ट इज दिस. एडमिन एक्सपेंस आपके सीओपी के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आ गया है. आर यू फॉलोइंग एवरीवन? सो दिस इज ट्विस्ट और कैच नंबर वन. यहां पे एरर होती है. आगे बढ़ू. द सेलिंग प्राइस इज 96. सेलिंग एक्सपेंस इज 5 पर यूनिट. हाँ, सेलिंग एक्सपेंस विल बी आफ्टर सीओजीएस ओनली. ठीक है. 80% ऑफ विच इज वेरिएबल. So 5 यूनिट पर 5 पर यूनिट इज द सेलिंग एक्सपेंस. टोटल सेलिंग एक्सपेंस उसमें 80% इज वेरिएबल. प्रोडक्शन इन ईयर वन इज 6,000 यूनिट्स. सेल इज 5,000 यूनिट. तो कैन आई से क्लोजिंग स्टॉक इन ईयर वन वुड बी 1,000? Yes or no? So can I say your standard assumption does not hold true? Sir, opening stock 1,000 यूनिट हुआ तो it is same only ना. Opening and closing is same. तो sir, how did you get to know that standard assumption is not holding true? Closing stock हमें पता चल गया, it is 1,000 यूनिट. बट सर अगर ओपनिंग स्टॉक भी 1,000 ही होता तो कैन आई से स्टैंडर्ड assumption ऑल एक्टिविटीज अक्रू इवनली थ्रू आउट द ईयर होल्ड्स ट्रू. तो आपको कहते कैसे पता चला कि सर ओपनिंग स्टॉक इज नॉट 1,000 यूनिट्स? इन द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन आई कॉट द हिंट. एमए लिमिटेड इज कमेंसिंग अ न्यू प्रोजेक्ट. कमेंसिंग मीन्स शुरुआत हो रही है. तो शुरुआत में ऑब्वियसली देयर वुड बी नो ओपनिंग स्टॉक. यस और नो? 0 यूनिट्स होगा. तो कहना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज डिफरिंग. तो स्टैंडर्ड assumption नंबर वन, all activities accrue evenly throughout the year. For stock, it is not holding true. Followed? Everyone understood? So this is the hints that you need to catch. So this was catch number 2. That this question is where the standard assumption will not hold true. Okay, second year में 9,000 units, 8,500 units sold. Raw material storage 2.25 months. WIP nil means we have to ignore WIP over here. Debtors 1 month's average sale. Average sales. Hint number 3. Follow total basis. 1 month's average sales. Hint number 4. Depreciation.
Depreciation. Can I say depreciation is included in production? So you can use total basis. क्वेश्चन 5 था ना, आ गया यार. ठीक है, so we have to use total basis. Cash balance 10,000, average payment period 1 month, outstanding expenses 1 month. Okay, FG holding period नहीं दिया है. So there would be some indirect way to calculate FG stock. Let's see how do we calculate that. What have they asked in the question? Prepare PNL, projected PNL, and working capital requirement, statement of working capital requirement. ये हमारा जो कॉस्ट स्टेटमेंट होता था वो कॉस्ट से लेके सेल्स तक आता था, तो वही पीएनएल हो गया ना. आर यू गेटिंग दिस? सो इफ वी प्रिपेयर द कॉस्ट स्टेटमेंट, ऑल द कॉस्ट आइटम विल बी इंक्लूडिंग इन दैट स्टेटमेंट. प्रॉफिट आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा. सो इनडायरेक्टली माई पीएनएल वुड बी डन. यस और नो? एंड फ्रॉम बेस्ड ऑन दैट पीएनएल, see in short this PNL is nothing but they are asking you the cost statement. Cost statement का नाम PNL कर दिया. And from that cost statement we will prepare chart of working capital needs for both the years. ठीक है, दोनों साल आ जाएगा. Okay. So let's see how to proceed with practical problem number 5. This problem is unique and tricky. Tricky in the sense you had to catch the hint कि here standard assumption number 1 will not hold true. 2 साल के लिए पूछा है, तो यहाँ पे year 1, year 2 estimation of working capital needs. फॉर्मेट क्या था? करंट असेट्स लेस करंट लायबिलिटीज. लेस करंट लायबिलिटीज. सो फर्स्ट बी रेडी विद योर फॉर्मेट. ठीक है, करंट असेट में फर्स्ट इज स्टॉक. स्टॉक में भी देयर वुड बी RM. WIP is nil, so we have to ignore that. Then second stock would be FG. फिर नंबर 2 receivables. Yes or no? फिर नंबर 3 कैश एंड बैंक बैलेंस. Is there any expenses prepaid? There are no prepaid expense if you read the question carefully. So can I say this would be my gross duration? Current liabilities में number 1 payables and number 2 other current liabilities. Other current liabilities में you will get outstanding expenses. So I will get net ड्यूरेशन नहीं है, सॉरी, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. दिस इज नॉट ऑपरेटिंग साइकिल का क्वेश्चन, दिस इज वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन का क्वेश्चन. सो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, you can write net working capital or you can also denote this as excess of current assets over current liabilities. There is no safety margin, so this only would be my working capital required. So working capital required. सबके बीच मैंने इतनी स्पेसिस क्यों छोड़ी है, यू विल गेट टू नो इन सम टाइम. अच्छा, नाउ टू कंप्लीट दिस फॉर्मेट आई वुड नीड कॉस्ट स्टेटमेंट, एंड इन दिस दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट स्टेटमेंट. हम वर्किंग नोट में बनाते थे, यहाँ पे पूछ ही लिया है डायरेक्टली. सो लेट्स टर्म दिस एज नंबर 1 कॉस्ट स्टेटमेंट
And this cost statement can be termed as P&L account for year 1 and year 2. So year 1, year 2. Okay? So let's start with raw material consumption. Bolo, in year 1, my production is 6,000 units and raw material cost is 40 units. So क्या my raw material consumption cost would be 4,80,000 ki 2,40,000? Tell me. Capacity is 12,000, but production is 6,000 units, and in year 2 it is 9,000 units. बोलो कंजम्पशन रॉ मटेरियल यूनिट्स पूरे कैपेसिटी पे कंज्यूम होगा कि हाउ मच आई प्रोड्यूस उस पे कंजम्पशन होगा? कहने से ऑब्वियसली हाउ मच आई कंज्यूम प्रोड्यूस उस पे होगा. सो यर रॉ मटेरियल कंजम्पशन, और आई विल जस्ट राइट RM कंजम्पशन. So it will be 6,000 into 40 per unit, which comes to 2,40,000. And in year 2, it would be 9,000 into 40 per unit, 3,60,000. Any doubts in raw materials? Raw material consumption is never on budgeted capacity. It is never on annual capacity. कितना कंज्यूम हुआ तो जितना प्रोडक्शन हुआ होगा उतना कंजम्पशन होगा. अगेन लेबर वुड बी पेड हाउ मच यूनिट्स दे हैव प्रोड्यूस्ड. करेक्ट. सो लेबर कॉस्ट वुड बी on how much they produce. So 6,000 units into 20, 1,20,000, and 9,000 units into 20, 1,80,000. Correct everyone? Done till here? Labor also would be paid how much units they are able to produce. Next, fixed manufacturing expense. See, manufacturing expense में दो है. One is fixed and one is depreciation. All these are part of cost of production. Huh? Fixed manufacturing expense. My question to you, it would be on 12,000 units के 6,000 units. Tell me. क्या हो गया? हाँ, fixed is always on annual capacity. Whether I produce 1,000 units, 9,000 units, 10,000 units, 12,000 units, मुझे रेंट तो पूरे का पूरा भरना पड़ेगा. Yes or no? So fixed expense is always on annual capacity. ठीक है? Annual capacity. Good. You caught this. That is good. So 12,000 into 6, 48,000. And this will remain same, 12,000 into 6. That's why it is called fixed expense. Following depreciation. Since we are following total basis. Depreciation again on 6,000 units ki 12,000 units. Yes, 12,000 units. Sorry, 12,672, huh? Not 48. 12,672, sorry. Depreciation again on annual capacity. Why? Because see, अंडरस्टैंड द लॉजिक. मशीन है, मशीन पे डेप्रिसिएशन है, तो मशीन से आप 1,000 यूनिट्स निकालो, 12,000 यूनिट्स निकालो, मशीन पे तो पूरा ही डेप्रिसिएशन लगेगा ना. आर यू फॉलोइंग? सो अगेन डेप्रिसिएशन इज ऑन एनुअल कैपेसिटी. इफ यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज द मशीन टू द फुल कैपेसिटी, देन इट इज योर प्रॉब्लम. मशीन तो अब डेप्रिसिएट होते जाएगा ईयरली बेस्ड ऑन SLM बेसिस. ठीक है? So 12,000 into 10, 1,20,000. 1,20,000. ठीक है? तो यहां पे मैं लिखता हूं एनुअल कैपेसिटी, depreciation annual capacity. They have told that fixed admin is also part of cost of production. So fixed admin, again this is a fixed cost. So again on annual capacity. How much is 4? So can I say year 1 में 48,000 आएगा,
ईयर 2 में भी 48,000 आएगा बिकॉज अगेन दिस इज फिक्स्ड. सो एनुअल कैपेसिटी. So can I say I will get total cost of production now? Yes or no? Total cost of production नहीं, this would be called as gross factory cost. उसमें हम ओपनिंग WIP ऐड करेंगे, क्लोजिंग WIP माइनस करेंगे एंड वी विल गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. बट कैन आई से देयर इज नो WIP इन दिस क्वेश्चन, सो आई कैन टर्म दिस टोटल एज माय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. बोलो हाउ मच इट इज इन ईयर 1. टोटल करो. 240, 360, 480 plus 110. 6 lakh everyone. 6 lakh for year 1. Okay. For year 2, please add and tell me the total. 780. Okay. So 780. Now tell me, will this my cost of production be equal to COGS? No, here it will not be same. Why? Because cost of production के बाद हम opening FG ऐड करते थे, क्लोजिंग FG माइनस करते थे, तब जाके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता था. आर यू गेटिंग दिस? हाँ, till now all the question had this same value for opening FG, closing FG. So our cost of production was equal to COGS. But यहाँ पे it is a twist. Why? Because opening FG is 0 units, but closing FG, can I say 1000 units है? Yes or no? So how to find this value? How to find this value? How to find this value? We will move to our costing ka logic. We'll move to cost sheet. Can I say this 6 lakh is cost of production? How much is the units produced? 6,000 units. Yes or no? Opening is 0. 0. Closing is, can I say, closing would be how much? 6,000 units में से मैंने 5,000 सेल कर दिए, तो 1,000 would be closing units. Yes or no? So cost of goods sold, goods कितने यूनिट सोल्ड हुए? 5,000 यूनिट सोल्ड हुए, तो आ गया 5,000 यूनिट्स. एवरीवन. So you have to just cross multiply. If 6 lakh is for 6,000 units, तो 5,000 units का कितना होगा? Can I say COGS would be 5 lakh? Yes or no? Opening stock is 0, तो this will be nil, and closing stock is 1,000 units, तो ये 1 lakh माइनस हो जाएगा. Everyone understood this? 1 lakh. बोलो एनी डाउट्स इन दिस 1 lakh? तो कहना है अब हमें FG होल्डिंग पीरियड की कोई जरूरत नहीं है. मेरा दिस इज 1 lakh इज नथिंग बट क्लोजिंग FG स्टॉक ओनली. Are you following this? So that's why question has not given you FG holding period separately. तुमने ये कॉस्ट स्टेटमेंट में ही कर लिया. क्लोजिंग FG की वैल्यू कितनी है? 1 lakh. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स टिल ईयर? एनी डाउट्स? तो अब ईयर 2 में क्या हो जाएगा? कहना है ईयर 2 में ये ईयर 2 का ओपनिंग विल बी ईयर 1 का क्लोजिंग. सो दिस वुड बी 1 lakh ओपनिंग में. यस और नो? सो लेट्स सी, ईयर 2 में प्रोडक्शन वाज 9,000 यूनिट्स, उसमें प्लस 1,000 यूनिट्स वर माय ओपनिंग FG. तो आई एम हैविंग टोटल 10,000 यूनिट्स. यस और नो? आर यू गेटिंग दिस? ये 10,000 यूनिट्स में से मैंने 8,500 सेल कर दिए. तो कहने से 1,500 यूनिट्स वुड बी माय क्लोजिंग स्टॉक and 8,500 units is my COGS. Followed everyone? So this will be added, this will be subtracted. Understood? So if I tell you ये जो 10,000 यूनिट्स जो बने हैं,
उसकी वैल्यू कितनी है? कैन आई से इट इज नथिंग बट 8,80,000. एवरीवन, आर यू फॉलोइंग दिस? जस्ट योर कॉस्ट शीट. So 7,80,000 is the cost to produce 9,000 units in year two. But we have 1,000 unit which is costing 1 lakh. We are taking it over from last year. So can I say 10,000 unit का total cost is 880. So what would be the cost for 8,500? What would be the cost for 1,500? Can you tell me कितना आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके? 1,32,000 is closing. Okay. So 132 is closing FG in year 2 ka value. In year 2. Closing FG value in year 2. And this comes to COGS comes to COGS is how much? 748. So 748 is COGS. ठीक है. COGS के बाद हम एडमिन और सेलिंग ऐड करते थे. बट यार एडमिन इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सो वी विल नॉट एड इट अगेन. अब हम सिर्फ सेलिंग एक्सपेंस ऐड करेंगे. एंड कैन आई से सेलिंग एक्सपेंस is always paid on the units sold. सेलिंग एंड सेल्स कमीशन आप किस पे दोगे? जितना यूनिट्स बेचा है उस पे ही सेल्स कमीशन दोगे ना. अंडरस्टैंडिंग? सो सेलिंग एक्सपेंस टोटल इज ₹5 पर यूनिट. यस और नो? उसमें वेरिएबल होगा एंड फिक्स्ड है. फिक्स्ड सेलिंग एंड वेरिएबल सेलिंग. ठीक है. हाउ मच इज वेरिएबल सेलिंग? कैन आई से इट इज 80% विच इज वेरिएबल. So 80 means ₹4 is variable and ₹1 is fixed. Understood this breakup? Total is ₹5 selling expense. उसमें से 80% is variable. Variable means जितने यूनिट सोल्ड किए उतने आपको मिलेंगे. तो कैन आई से इन ईयर 1 5,000 यूनिट्स आर सोल्ड. तो दिस वुड बी 20,000. एंड इन ईयर 2 8,500 units are sold. So 8,500 into 4. 34,000. But fixed selling is always again, this is a fixed cost. आप कुछ भी कर लो वो फिक्स्ड एनुअल कैपेसिटी पे ही लगेगा. सो ईयर 12,000, 12,000. फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज ऑन एनुअल कैपेसिटी. ठीक है. So can I say my total now this is termed as cost of sales. कितना आया टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स? 5 lakh plus 12 plus 20. 5,32,000. यहाँ पे 748 plus 46. 58, 68, 78, 88. 792. Followed everyone till year cost of sales. How much is my sales in year 1? Can I say sales will be 5,000 into selling price of 96, and in year 2 it would be 8,500 into 96. So can I say sales for year 1 would be 5,000 units into 96. कितना आ रहा है? 4,80,000. And year 2 में how much is my sales? It in units it is 8,500 into 96 is selling price 8,16,000. So can I say in year 1 I am incurring a loss? Yes or no? How much is my loss in year 1? How much is my loss? फर्स्ट ईयर का बताओ ना. 52,000. 52,000. This is loss, huh? So I am writing it in bracket.
एंड ईयर टू का प्रॉफिट कोई 22 बोल रहा है, कोई 24 बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा। 22,000, दिस इज प्रॉफिट। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? एवरीवन, एनी डाउट्स? See, our profit loss statement is ready. 52 and 22. Everyone done? Part वन क्या पूछा था? प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढ लिया। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज नथिंग बट कॉस्ट स्टेटमेंट। आगे एनी क्वेरीज? 52 लॉस इन ईयर वन, 22 प्रॉफिट इन ईयर टू। कैन यू सी -52 प्लस 22? डन। अब हमारा टास्क क्या बचा? टू प्रिपेयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। दिस इज नंबर टू। For that, our source document is completely ready now. Variable selling. Variable selling, total selling expense is 5. So I have taken 5 as total. उसमें बोला 80% is variable. So कहने से 5 का 80% कितना होगा? 584. So 4 per unit is selling expense. वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस। तो बाकी जो 1 रुपीज पर यूनिट बचा वो क्या होगा? फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस। So fixed selling is a fixed cost. It will be always based on annual capacity. So can I say fixed selling expense would be 12,000 is the annual capacity into 1 per unit, 12,000. And variable selling which is 4 per unit. तो वेरिएबल सेलिंग मीन्स आप जितना सेल करोगे उतना आपको सेल कमीशन। सेलिंग एक्सपेंस इज नथिंग बट सेल कमीशन। आर यू गेटिंग दिस? तो इन ईयर वन 5,000 का 5,000 का मार्केटिंग पर्सन ने सेल किया, तो उसको मैं 5,000 इंटू 4 20,000 सेल्स कमीशन दूंगा। बिकॉज इट इज वेरिएबल, जितना सेल करोगे उतना आपको कमीशन मिलेगा। इन ईयर टू 8,500 का सेल किया, तो 8,500 इंटू 4 उतना कमीशन मिला। फॉलोड? सेलिंग एक्सपेंस यू कैन कंसिडर दिस एज सेल्स कमीशन। क्लियर? सो आर कॉस्ट स्टेटमेंट और पीएनएल स्टेटमेंट इज रेडी। ठीक है? अंडरस्टूड? ट्विस्ट कहा था या ओपनिंग एफजी क्लोजिंग एफजी में। ठीक है? Your cost of production is not my COGS because opening FG closing FG is differing. तो हमें पूरा कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा प्रॉपर। नाउ लेट्स कम टू रॉ मटेरियल स्टॉक। स्टॉक ऑफ आरएम फॉर्मूला क्या थी? आरएम कंजम्पशन। यस और नो? आरएम कंजम्पशन इनटू आरएम होल्डिंग पीरियड डिवाइड बाय 12। सो टेल मी ईयर वन का आरएम कंजम्पशन कितना था? नाउ जस्ट सी द कॉस्ट शीट। कहने से RM consumption is 240 and 360. So year one, year two, 240 and 360. How much is raw material holding period? It is given in the question here. 2.25 months average consumption is in store. So 2.25 divided by 12. 2.25 divided by 12. कितना आया for year one and year two? Tell me how much is the RM stock in year one? 45. And in year two, so here it is 45. And in year two, it is year two 67,500. So year two के कॉलम में मैं 67,500 लिख दूंगा। RM डन। एफजी में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। I've already found the value of closing FG. FG stock means closing value of FG. Can I see in year one it is 1 lakh and in year two it is 1,32,000? Yes or no? Just see the cost statement. तो डायरेक्ट लिख सकता हूं 1 lakh in year one, 132 in year two. ठीक है? From cost statement directly. Understood?
एंड हमारे पास होल्डिंग पीरियड भी नहीं दिया है एफजी का, तो सीओजीएस इंटू होल्डिंग पीरियड भी नहीं कर सकते, ठीक है। सो डायरेक्ट क्लोजिंग एफजी का वैल्यू टेकन। receivables, since I am following total basis, I have to value my receivables on sales, yes or no? So year 1, year 2, how much is the sales in year 1? 4 lakh 80 था, and in year 2 कुछ 794 था आई गेस, नहीं 816 था, so 480 816. Average collection period from debtors is how much? 1 month average, ठीक है, so into 1/12 कितना आया? 40,000 in year 1. And in year 2, how much is the value of my receivable? 68,000. Done. Receivables में कोई doubt? Any queries, any concerns? Cash balance. At any point in time, I have to keep 10,000 as cash balance. So year 1 में भी मैं cash balance 10,000 रखूंगा, और year 2 में भी that cash balance will remain same, ठीक है। So 10,000 ये कहाँ लिख दिया मैंने? Cash balance is here. 10,000 at any given point in time, बैलेंस शीट में मेरा कैश बैलेंस 10,000 दिखेगा। सो टेल मी व्हाट इज माय ग्रॉस वर्किंग कैपिटल फॉर ईयर 1? कैन आई सी ईयर 1 में 45,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,40, 1,85, 1,95। ईयर 2 में इट विल बी 67,500 प्लस 132 प्लस 68 प्लस 10, 277,500. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज डन, ठीक है। ये स्लाइड एक्स्ट्रा आ गई है, जस्ट इग्नोर दिस, नथिंग ओवर हियर। लेस करंट लायबिलिटीज, पेबल्स, ईयर 1, ईयर 2। कैन आई से पेबल is based on raw material purchases, yes or no? In this question, my purchases will not be equal to raw material consumption. Why? Because raw material consumption is nothing but, can I say raw material consumption? Working note 1, calculation of raw material purchases. Can I say my raw material consumption is nothing but opening RM plus purchases less closing RM? Yes or no? तो ईयर 1 का कंजम्पशन देखते हैं। ईयर 1 का कंजम्पशन, हाउ मच इज रॉ मटेरियल कंजम्पशन इन ईयर 1? कैन आई से इट इज 240। ये 240 कैसे आया होगा? ओपनिंग रॉ मटेरियल वुड बी नील बिकॉज आई एम कमेंसिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। I don't know the purchase amount, but can I say from working capital statement, I have found closing RM, closing value of RM stock? Yes or no? 45,000 is my closing RM for year 1. Are you following? So यहाँ पे in this question, RM consumption will not be equal to my RM purchase जैसे पहले होता था। Why? Because opening stock of RM is different than closing stock of RM. Followed? So यहाँ पे raw material, so closing RM was 45,000 in year 1. Yes or no? So how much is my purchases? Therefore, purchases in year 1 is how much? 2,85,000. And my payables will be based on 2,85,000 and not 240. Yes or no? Likewise, we will find purchases for year 2. Again, raw material consumption in year 2, how much it was? 3,60,000. तो ये 360 कैसे आया हुआ होगा? Can I say opening RM of year 2?
opening RM of year 2 is nothing but closing of year 1. Following? So year 2 mein opening RM will not be nil. It will be 45,000. Plus purchases I don't know. But closing RM of year 2 I know. Closing RM of year 2 is 67,500. Followed? So दिख रहा है दोनों में difference. Opening RM was 45, closing became 67,500. Standard assumption, all activities accrue evenly throughout the year, not holding true over here. So minus 67,500. So my payables for year 2 will be based on which value? 380 to 500. Followed? So students do mistake over here. Payables calculate करने के लिए वो 240 और 360 ले लेते हैं, which is wrong, which is actually a RM consumption की amount, which is not RM purchase की amount. Followed? So 380 to 500 and 285 is my actual purchase. So 285 in year 1, 380 to 500 purchase amount in year 2. How much is credit given by my suppliers? Credit for materials 1 month. So 1 by 12, 1 by 12. ठीक है? So tell me, how much is my payables for year 1? 23,750. And how much is payable for year 2? 31,875. 31,875 यहाँ पे लिख दू. डन. पेबल्स डन. अंडरस्टूड कि हमें पेबल्स परचेजेस पे वैल्यू करना है, नॉट ऑन कंजम्पशन. Followed? Because in this question, consumption raw material value will differ from purchase RM की value. Done. Last but not the least, outstanding expense. इसमें क्या बोला है? Creditors for expenses 1 month for all the expenses. आर यू फॉलोइंग? मतलब जितने भी एक्सपेंस हमारे कॉस्ट शीट में है ना, कौन से बच्चे हैं? मटीरियल इज तो डन, बट कहने से अदर एक्सपेंसेस आर लेबर कॉस्ट बचा है, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग बचा है. यस और नो? ये डेप्रिसिएशन लेंगे कि नहीं लेंगे? इवन दो इट इज टोटल बेसिस. कहने से डेप्रिसिएशन क्या आउटस्टैंडिंग क्या प्रीपेड, इट इज नॉन कैश एक्सपेंस. सो हम ये लेबर कॉस्ट लेंगे, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग का टोटल लेंगे, फिर आता है फिक्स्ड एडमिन, दैट इज ऑल्सो विल बी पेड इन कैश, एडमिन लेंगे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेलिंग एक्सपेंस का टोटल लेंगे. ठीक है? सो कहना है लेट मी जस्ट प्रिपेयर वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इन ईयर 1, इन ईयर 2. तो ईयर 1 में एक्सपेंसेस में लेबर कॉस्ट आएगा, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आएगा, फिक्स्ड एडमिन आएगा. इवन दो इट इज ऑन एनुअल कैपेसिटी, इट इज इररेलेवेंट, बिकॉज एडमिन एक्सपेंस आज नहीं तो कल हमें कैश में ही पेमेंट करना है. एंड सेलिंग एक्सपेंस का टोटल आएगा, ये सबका टोटल लेना है अब आपको. तो हाउ मच इज माई लेबर? 120, 180. सो लेबर इज 120, 180. ठीक है? फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग इज हाउ मच? 72, 72. फिर आई गेस फिक्स्ड एडमिन वाज 48, 48. एंड हाउ मच इज माई टोटल सेलिंग? इसमें फिक्स्ड वेरिएबल दोनों आ जाएगा. बोथ विल बी पेड इन कैश ओनली, आज नहीं तो कल. सो फॉर ईयर 1 इट इज 32, फॉर ईयर 2 इट इज 46. ठीक है? सो 32, 46. सो टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंस इन ईयर 1, ईयर 2. इसके अलावा कोई एक्सपेंस बाकी रहा, डेप्रिसिएशन ही है, बट वी विल नॉट कंसिडर इन अदर करंट लायबिलिटीज. So 120 plus 72 plus 48 plus 32.
2,72,000 एंड यहाँ पे 180 प्लस 72 प्लस 48 प्लस 46. ईयर टू का टोटल 346. एवरीवन 272 एंड 346. किसी का कोई अलग अमाउंट आ रहा है? सेम. ओके. सो दिस इज आउटस्टैंडिंग फॉर 1 month. दिस इज व्हाट क्वेश्चन सेज, ऑल एक्सपेंसेस. बट हमें पता चलना चाहिए कि डेप्रिसिएशन ले लेना होता है. ठीक है. सो फ्रॉम वर्किंग नोट टू. ए यार, आज भी वापस ये कर दिया. अदर करंट लायबिलिटीज. वर्किंग नोट टू से हमारा कैलकुलेशन हुआ. ईयर 1, ईयर 2. ईयर 1 वॉज कितना था, भूल गया मैं. 346 एंड 280. नहीं, कितना था, 272. तो 272 इंटू 1/12. 346 into 1/12. So how much is my other current liabilities? That is outstanding expense. 282 था. Was it 282 for year 1? 272 था यार. 272 था. So it is 272 only. Okay. So how much is 22,667 for year 1? And how much is outstanding expense for year 2? 28,833. 28,833. ठीक है. एवरीवन गॉट दिस सेम अमाउंट. ओके. सो माय ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज 1,95,000 फॉर ईयर 1. 277,500 फॉर ईयर 2. उसमें से वी विल सब्ट्रैक्ट पेबल्स 23,750 फॉर ईयर 1. 22,667 फॉर ईयर 1. सो 195 माइनस 23,750 minus 22,667. How much is working capital required in year 1? 148,583. 148,583. In year 2, it would be 277,500 minus 31,875 minus 28,833. 216,792. 216,792. This is my working capital estimate for year 2. ठीक है एवरीवन. See, got the answer. Weird आया. Amounts are odd, but it is getting tallied. So ऐसा डर नहीं जाने का कि सर ऐसा वियर्ड अमाउंट आया होगा तो रॉन्ग होगा. नो, इट इज करेक्ट. फॉलोड एवरीवन. एफजी इज क्लोजिंग. यस. स्टॉक ऑफ एफजी क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी होता है ना. बैलेंस सी वर्किंग कैप करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज कम अंडर बैलेंस शीट. दे आर द आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट में करंट असेट में जो इन्वेंट्री होता है वो ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक होता है, नॉट ओपनिंग स्टॉक. गेटिंग इट? Any doubts in this question? So this was a unique question where our standard assumption number 1 did not hold true. इस क्वेश्चन में there were 3-4 unique points. Unique point number 1 was
Debtors are based on sales. So this is somewhat indirect hint कि आपको total basis लेना है. Number two, hint number two or unique point number two, commencing a new project means opening stock would be nil, but closing stock तो कुछ ना कुछ तो होगा. So from this hint, we can make out that standard assumption number one, which was all activities accrue evenly throughout there, is not holding true over here in this question specifically. Number three, unique point number three, cost information for production is given below and admin is included in production cost. So हमें cost of production के पहले ही admin add कर देना है. So you have to read this. This cost information per unit is ascertain for production. प्रोडक्शन करने के लिए कौन से खर्चे हो रहे तो ये सारे हो रहे हैं. So admin is included in the cost of production in this question. Ideally, we assume that admin is a general admin. It does not form part of cost of production. Are you following this? So this was unique point number three. Unique point number four, fixed expense जितने होते हैं, it is irrelevant how much units you produce, how much unit you sell. Fixed expenses are always on annual production capacity. Followed ये चार unique points हैं. So I wanted you to get clarity कि अगर assumption, standard assumption लेते हैं तो हमारा solution कैसे बनता है. If there is specific hints about assumption not holding true, तो हमारा solution कैसे बनेगा. Followed. So here cost of production will not be equal to cost of goods sold. Here, raw material consumption will not be equal to raw material purchases. Everything clear? Hey, how to know annual capacity is given in the question. For annual production of 12,000. So this is, which is full capacity. Full means annual capacity. Full means maximum machine can produce 12,000 units. Full capacity, it is given in the question. So how to know? क्वेश्चन से पता चलेगा. Clear? Aditya, any doubts? Other students, any doubts in today's session? So in today's session, we learned the concept of working capital operating cycle. We learned duration of operating cycle. We learned about financing of working capital. We also learned कि अगर standard assumption does not hold true, then how to approach the question. Brief on creditor. Creditor is based on purchases. Here raw material consumption is not equal to my raw material purchase. So if they both are not equal, then how to find the value of purchases? So in that case, we apply the formula that we have learned at foundation level. क्या फॉर्मूला सीखी थी. रॉ मटेरियल कंजम्पशन इज नथिंग बट ओपनिंग आरएम स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग आरएम स्टॉक. तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन की अमाउंट है, आई हैव क्लोजिंग आरएम स्टॉक की अमाउंट, तो परचेजेस आई कैन फाइंड. वंस परचेज अमाउंट इज फाउंड, आई कैन वैल्यू माय पेबल्स. सिंपल. यस. Clear? Last time one student had a doubt on Graham and Dodd model. So let me just give the formula of Graham and Dodd model of dividend decision. This is a part of dividend decision, nothing to do with working capital. एक student को Graham and Dodd model, although there are no practical problems on it, still I am giving the formula. Again, Graham and Dodd model has given the formula to calculate the value of the share today, the worth of the share today. It is nothing but D is nothing but dividend, E is nothing but EPS, divide by 3 into multiplier. D is nothing but dividend per share.
E is nothing but earnings per share. So if gram and dot model का question पूछते हैं, they will give all the variables of the formula and you have to just substitute it. Gram and dot model का base is very simple. The base is retained earnings should be given less weightage than dividends. This is the base of gram and dot model. बहुत detail में मत जाना. Derivation is little complex, but I'm just trying to give you the base. The base is Graham and Dodd asked few financial managers, or not just financial managers, but he asked the investors कि आपको आज डिविडेंड मिल जाए उसमें इंटरेस्ट है कि कंपनी वो डिविडेंड को रिटेन करे, वो एक्सपांशन के लिए इन्वेस्ट करे, फिर एक्सपांशन से कुछ ग्रोथ करे एंड आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम दे डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, इसमें इंटरेस्ट है. तो ऑफ एवरी 5 इन्वेस्टर 4 वर ऑफ द ओपिनियन की हमें आज डिविडेंड दे दो, हमें एक्सपांशन ग्रोथ फ्यूचर डिविडेंड में इंटरेस्ट नहीं है, हमें रिटेंशन ग्रोथ इन रिटेन अर्निंग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें आज डिविडेंड आज पैसे मिल रहे हैं हम आज लेके निकल जाएंगे, फ्यूचर इज वेरी अनसर्टन. So base is this. Dividend is getting full weightage and earnings by 3 is actually not 1/3 of earnings, but it is related to retained earnings. So retained earnings is getting less weightage compared to dividend today. Understood? So even in your module, they have not given the derivation. Just don't go deep into the derivation. Derivation थोड़ा लंबा है. I can explain you that, but some other time. ठीक है? And if gram and dot model will be asked, then they will just give the variables of the formula and they will ask you to find the value of share today. Followed, so you can just note this formula if you want to. Opportunity cost is always after tax. Why? Because opportunity cost is discounting rate. Discounting rate is WACC. WACC was what? KD into weight of debt. KD कैसे फाइंड करते थे? इंटरेस्ट 1 माइनस टी करते थे, तो इट वॉज ऑलवेज आफ्टर टैक्स. ठीक है. So with this, we end today's session. Thank you for your time. Happy weekend. Enjoy your Saturday night. Tech team, we are ending today's session. I don't know tech team is there or not. Tech team? Yeah, so please respond.